बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सन्स एंड लवर्स एज अ साइकोलॉजिकल नावल। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से इसको सुनिएगा। इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। सन्स एंड लवर्स बाय डी.एच. लॉरेंस इज़ अ साइकोलॉजिकल नावल दैट एक्सप्लोर द इनर वर्किंग ऑफ ह्यूमन साइकी एंड रिलेशनशिप पर्टिकुलरली विद इन अ फैमिली। ये साइकोलॉजिकल नावल है जो कि रिलेशनशिप ऑफ फैमिली फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनमें जो कम्प्लेक्स रिलेशनशिप है उसको एक्सप्लोर किया गया है इस नावल में। द नावल फॉलो द प्रोटैगनिस्ट पॉल मॉरल। इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है वो पॉल मॉरल है एंड हिज स्ट्रगल्स विद पर्सनल ग्रोथ एंड आइडेंटिटी एज वेल एज हिज कम्प्लेक्स रिलेशनशिप विद हिज मदर एंड अदर रोमांटिक पार्टनर्स। तो ये था इसका शॉर्टकट इंट्रोडक्शन। तो हम आगे देखते हैं साइकोलॉजिकल नावल होता क्या है। साइकोलॉजिकल नावल इज अ नैरेटिव genre that emphasize interior characterization and motivation to explore the spiritual, emotional, and mental lives of characters. As the name suggests, it is related to inner psyche of the characters. तो ये थी डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजिकल नावल की। तो हम नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ प्रोटैगनिस्ट। One of the key elements of Sons and Lovers as a psychological novel is the detailed exploration of protagonist's psychological development. Paul Morrell is depicted as a sensitive young man who struggled to find his place in the world. Throughout the novel, readers witness Paul's journey from the childhood to adulthood and his struggle with personal growth and identity. तो फोर्थ पॉइंट हमारे पास है complex relationships between family members. Another aspect of Sons and Lovers as a psychological novel is its exploration of complex relationship between family members. The novel centers around the relationship between Paul and his mother and his father Walter. The psychological dynamics between these characters are explored in great detail, particularly complex. The novel concerns an ambiguous nature of the relationship between Paul and his mother. For fifth point हमारे पास है themes of love, sexuality and personal growth. The novel explores various themes related the Roman psychology, including love, sexuality, and personal growth. Lawrence uses vivid description of characters, thoughts, and emotions to explore these themes, particularly in relation to their romantic relation. For example, the relationship between Paul and Clara is characterized by their natural sexual attraction, while Paul's with Miriam is characterized by emotional intimacy and a deep sense of connection. These relationships are used to explore the challenges of personal growth and identity, as well as complexities of love and sexuality. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है फ्रीडियन एंड psychoanalytical themes. Sons and Lovers can also be seen as a novel that engages with Freudian and psychoanalytical theme. For example, Lawrence's depiction of Paul's relationship with his mother has been interpreted as an example of Oedipus complex, where a young man has a subconscious desire for his mother. Similarly, the novel explores the ideas of expression and how the characters unconscious desires in their thoughts and behavior. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है द रोल ऑफ नेचर एंड इन्वायरमेंट. Another theme explored in Sons and Lovers is the role of nature and environment. Lawrence uses the landscape and natural surroundings to reflect the characters' inner lives. For instance, Paul finds
solace in natural world. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है लैंग्वेज एंड स्टाइल. लॉरेंस राइटिंग स्टाइल इज नोटेबल फॉर इट्स psychological depth and richness. He used detailed description of the characters' thoughts and emotions as well as metaphor and imagery to create a vivid experience. He used very simple and local language, giving readers a sense of the character's cultural background and soul status. नेक्स्ट है हमारे पास psychological realism. Sons and Lovers can be seen as an example of psychological realism, a literary movement that emerged in late 19th century. ये जो साइकोलॉजिकल रियलिज्म है ये 19th सेंचुरी की वो एक लिटरेरी मूवमेंट थी. दिस मूवमेंट emphasizes on the importance of representing the interior lives of characters with psychological depth and complexities. Lawrence focused on the character's inner life and the use of psychological symbolism and metaphor. So, Sons and Lovers is often cited as a key example of psychological realism in literature. तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि हमने पॉइंट वाइज हमने उसको डिस्कस किया है. तो इसको कंक्लूड कर लेते हैं. कंक्लूजन में देख लेते हैं. इन कंक्लूजन सन्स एंड लवर्स इज़ अ लैंडमार्क साइकोलॉजिकल नावल दैट एक्सप्लोर्स द complexities of human nature, particularly in relationship to family and romantic relationship. Lawrence's vivid description of characters, thoughts, and emotions, as well as his use of symbolism and metaphor, create a rich portrait of their psychological landscape. तो ये थी हमारी आज की वीडियो. तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी इस किस्म की वीडियो मैं अगर अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक वो पहुंच सके. तो मिलते हैं एक नई वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.